गाइस, वेलकम टू द अनलर्निंग एकेडमी। आज आप सबके लिए मैं फिर से करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ये अगस्त का है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आज क्या है करंट अफेयर्स में। रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज टू बूस्ट स्टार्टअप। तो देखते हैं गाइस, रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज टू बूस्ट स्टार्टअप। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ द measure taken by the Ministry of Electronics and IT to spur the technology-led innovation ecosystem in the country. Swadeshi means domestic. So आगे बढ़ते guys. Union Minister of Law and Justice, Communication and Electronics, Information Technology, Ravi Shankar Prasad launched Swadeshi Microprocessor Challenge Innovate Solution for Atmanirbhar Bharat on 18 August 2020. The aim is to provide further impetus to the strong ecosystem of startup, innovation and research in the country. Under the aegis of Microprocessor Development Programming of Minister of Electronics and IT, IIT Madras and Center for Development of Advanced Computing have developed two microprocessors named Shakti 32-bit and Vega 64-bit, respectively using open source architecture. तो देखते हैं गाइस इसके बारे में थोड़ा सा हाइलाइट्स क्या है गाइस। हाइलाइट्स हमें देखना चाहिए क्योंकि हाइलाइट्स से थोड़ा हम अच्छा से जान जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत aims to invite startups, innovators and students to use these microprocessors. The aim is to develop various technology products. Swadeshi Microprocessor Challenge is part of the measure taken by the Ministry of Electronics and IT to spur the technology-led innovation ecosystem in the country. The challenge is to open to the student at all level and startups. The challenge demand contestants to tinker with this Swadeshi processor IPs and facilitate them with innovating the frugal solutions for societal needs. तो देखते guys थोड़ा और। The challenge also aims to make available the entire homegrown ecosystem around Swadeshi processor to develop the complex design for catering to both global and domestic requirements in the near future. The participants can register at innovate.mygov.in. It is open from 18th August 2020 and culminates in June 2021. It provides an opportunity for 100 semi-finalists to win a total ₹1 crore of award, 25 finalists to win total 1 crore of award. Also, the top 10 team entering the finale will get the seed fund of total 2.30 crore and 12-month incubation support. All participants will be given an opportunity to translate their innovation around Swadeshi processors and showcase them at a higher viewership platform. It also facilitates them to scale from ideation to the marketplace, thereby standing a chance to contribute to the overall mission of Atmanirbhar Bharat of the government. ये लास्ट में आत्मनिर्भर भारत ऑफ द गवर्नमेंट है गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। तो गाइस देखते हैं क्या है। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। NRA National Recruiting Agency will conduct a common eligibility test to screen or shortlist candidates for Group B and C, which is for non-technical post. देखते हैं गाइस आगे। The Union Cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi approved the setting up of National Recruitment Agency. The aim is to pave the way for a transformational reform in the recruiting process for central government jobs. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी गाइस सेटअप करने का प्लान है गवर्नमेंट का। तो देखते हैं गाइस आगे। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के बारे में कुछ दिया गया है, देखते हैं गाइस क्या है। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी विल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टू स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड सी। मतलब ग्रुप बी और सी के लिए ये नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी गाइस के तहत लिया जाएगा। एंड विच इज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, मतलब ये सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। NRA will have representative for Ministry of Railways, Department of Financial Service of the Ministry of Finance, the Staff Selection Commission SSC, the Railway Recruitment Board RRBs, and the Institute of Banking Service Personnel. It is expected that the NRA would be a specialist body bringing state-of-the-art
technology and best practices to the field of central government recruitment. तो गाइस देखते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है गाइस, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं. The move comes as currently the candidates seeking government jobs have to appear for separate examination conducted by multiple recruitment agencies for various posts, for which similar eligibility conditions have been prescribed. With the introduction of NRA, a common eligibility test will enable the candidates to appear once and apply to any or all these recruitment agencies for higher level of examination. This will provide major relief to all candidates. तो गाइस ये NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये आप देख सकते हैं. ये ग्रुप बी और सी के लिए है और विच इज़ फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है. और किसके लिए है आप देख सकते हैं, SSC, रेलवे, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. तो गाइस NRA का NRA के लिए इतना ही था. अब आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त. गाइस आज के डेट में तो इंसानियत है ही नहीं, पर भी कुछ जो बचा है उसे सेलिब्रेट किया जाता है 19 को. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त. तो देखते गाइस आगे क्या है. तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एम्स टू कमेमोरेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एड वर्कर्स इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विस बाय रिस्किंग देयर ओन लाइफ. तो वो लोग जो बहुत मतलब जिसका मतलब अभी देख सकते हैं आप गाइस सीरिया में कितना दंगा मतलब कितना वहाँ पे बर्बादी छाया हुआ है. तो जो बाहर से एड देने जाते हैं एक्चुअली वो एक तरफ से सहायता ही होता है ह्यूमैनिटेरियन के थ्रू. तो ये अच्छी बात है. इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय एनीवन हु डू इट. सो हेड्स ऑफ टू देम. आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं इसके बारे में क्या है. World Humanitarian Day is observed on 19 August every year. The World Humanitarian Day aims to commemorate the involvement of aid workers in humanitarian service by risking their own lives. This year, the day is organized in a special way to fight against the deadly COVID-19. और आज this time मतलब these days this time it has been celebrated so nicely to fight against COVID-19. It is very simple. You can just understand it. The day focused to pay tribute to aid workers who involve themselves in humanitarian service by risking their lives. It aims to create awareness, share ideas, and encourage individuals in photography field. तो गाइस आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते गाइस. The United Nations General Assembly initiated the observation of World Humanitarian Day to remember the demise of Sergio Vieira de Mello and 21 of his fellow humanitarians in a bombardment of the Baghdad headquarters of the United Nations. Sergio and the people like him worked every day for the betterment of the needy, the poor and unprivileged, and those living in the areas of war, starvation and pestilence. In 2009, the United Nations General Assembly formalized the day as a World Humanitarian Day. So this is बहुत अच्छा गाइस है. इसमें एक्चुअली जो फ्री में किसी का सेवा करे उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड भी होना चाहिए. और इस दिन को सेलिब्रेट बहुत अच्छा से. ह्यूमैनिटेरियन इज इटसेल्फ इज अ अनएक्सप्लेनेबल वर्ड. इट्स सो मीन्स it's so good to help others. You can't imagine until you help others. So if you help others, you'll know how मतलब कितना अच्छा लगता है किसी को मदद करके. So आगे बढ़ते हैं guys. World Photography Day is observed on 19 August. आगे देखते हैं guys क्या है. World Photography Day is observed on 19 August. The day aims to pay homage to the beautiful form of art and to recognize the importance of photography in the world. तो उसी दिन को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है गाइस. वी सेलिब्रेट द सेम डे एज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टू. सो लेट्स गो अहेड. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 19 अगस्त. द डे एम्स टू पे होमेज to the beautiful form of art and to recognize the importance of photography in the world. This day aims to encourage photography as both a hobby and a profession and to learn more about this craft. अभी जो गैस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बनाया है वीडियो. उसमें बहुत अच्छा से आदमी को मतलब अभी जो किस स्किल्स टू मतलब द वे दे हैव फॉर्मुलेटेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी नाइस. Since the upcoming generation, those who will enroll within that policy, we have studied till now. अभी तक हमने 10+2 ही पढ़ा है,
but the way right now government has changes the education policy and expanding the GDP so much कि आने वाला जनरेशन they will really find themselves with a new skill. अभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं, पर आने वाले टाइम में एजुकेशन जो ऐसा अच्छा पॉलिसी लेके आया गवर्नमेंट, उसके तहत आदमी एक अपना स्किल भी डेवलप कर लेगा पढ़ते पढ़ते. तो आगे बढ़ते हैं गाइस. हिस्ट्री क्या है इसका? द डे वॉज इनिशिएटेड इन 1837 when Frenchman Louis Daguerre and Joseph Nicephore Niepce invented the daguerreotype, a photographic process. The operation of photography began on January 9, 1839. The French government announced the invention to the world on August 19, 1839. In 1861, Thomas Sutton took the first durable color photography. The first digital photography was taken in the year 1957. On 19 August 19, when the World Photography Day hosted its first global online gallery. So guys, ये बहुत अच्छा बात है. It's very good since we are celebrating the same day as the World Photography Day and it's very important. We know it. So आगे बढ़ते हैं guys. धन्वंतरी रथ to bring Ayurveda at doorstep of Delhi police families. धन्वंतरी रथ to bring Ayurveda at doorsteps of Delhi police families. Police Wellness Center will be catered by AIIA, which is an autonomous institute and supported by the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. All India Institute of Ayurveda signed a memorandum of understanding with the Delhi Police to extend the Ayurveda preventive and promotive health service in the residential colonies of Delhi Police. The MOU was exchanged between Commissioner of Delhi Police SN Srivastava and Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush. The Dhanvantari Rath was flagged off on 18 August 2020. तो आगे देखते हैं guys. Dhanvantari Rath. Under the memorandum of understanding, the service will be provided through a mobile unit named Dhanvantari Rath. Dhanvantari Rath is a mobile unit of Ayurveda healthcare service. It consists of a team of doctors who would be visiting Delhi police colonies regularly, and the Ayurveda healthcare service will reduce the incidence prevalence of various diseases and also reduce the number of referrals to hospital, thereby reducing the cost to healthcare system as well as patient. So let's move on. Police Wellness Center will be created by AIIA, which is an autonomous institute and supported by the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. Ayu Raksha is a joint venture of AIIA, an autonomous institute under the Ministry of Ayush and Delhi Police. The JV aims to maintain the health of frontline COVID warriors like Delhi Police personnel through Ayurveda, immunity boosting measures. Ayurveda preventive and promotion healthcare has been planned to be extended to the family of Delhi Police personnel. So guys, thank you so much for watching. Guys. Do share and subscribe the channel. और आज के लिए इतना ही रखते हैं. Okay guys, thank you.